Today we will discuss in this class coagulation or flocculation, Hadis-Page rule, flocculation value, protective currents, Gold number, and probably emulsion. If time does not, then emulsions. Then is emulsions. Here. So what is coagulation or flocculation value? Coagulation, simple. I am giving the practical example. One practical example you will understand thoroughly. Suppose in खरा दिने in summer season जेतले कोडा देखियो गाय जो को मान थाए कोडा खोले दियंती से खोले जाला परे से कोन करती गोटे फिटकिरी पकई फिटकिरी पकई देले देखियो से जो कादुओ पानी गुडा थाए से कोन होबे बसी जाए बसी गले पानी स्वच्छ हो जाए. That process is coagulation. That process is coagulation. से जो कादो पानी का था that is colloidal particles. जितना तो फिटकरीटा ऐड करी उसका इलेक्ट्रोलाइट और coagulant से ऐड कला परिचय करो वो there is aggregation of particles. से particles उड़ा aggregate है जो क्या मिसी जीव है तो particles aggregate है जो मिसी जीव सेटा बसी गले कौन हो the particles will settle down. That process is called coagulation. And we are adding suitable electrolyte. We are adding for that suitable electrolyte that is called coagulant. So what is coagulation? First we will discuss what is coagulation or flocculation. Then Hadis-Page rule. What is flocculation value or coagulation value? What is protective column? What is gold number and what is gold number and respective things. So we will discuss first what is coagulation. What is coagulation? Coagulation. Coagulation. What is coagulation? When an electrolyte is added in large concentration, the particles of the solution takes up the ions which are oppositely charged and thus get neutralized. The neutral particles that get aggregated to give precipitates of larger size which get the particles are aggregated to give precipitation and this process is called coagulation. So coagulation la ame simple जेतरा गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करवा लार्ज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन जो पार्टिकल्स ता थिबो आयंस दैट इज पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस सेटा एग्रीगेट हे जिवो सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस एग्रीगेट हे जिवो एग्रीगेट हैला पर सेटा न्यूट्रलाइज हे जिवो न्यूट्रलाइज रहि गले दे विल द न्यूट्रल पार्टिकल्स गेट एग्रीगेटेड टू गिव particles of larger size. Neutral particle ता aggregate है जिवो larger particle size दवा and precipitation है सही प्रोसेस टा को कौन कह जिवो coagulation. Simple आमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करिवा simple देखो simple आमे गोटे coagulated solution जो बॉडी वाटर सपोज बॉडी वाटर अछि बॉडी माने कादो पानी थी सेथरे आमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट पोटास आलम ए जो फिटकिरी ऐड करबा सेठी ऐड करले करबो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स ता थिबो सेटा एग्रीगेट हे सेटा एग्रीगेट हे गले तार मास ता पड़ी जिवो मास पड़ी गले से विल सेटल डाउन सेटा पसी जिवो प्रेसिपिटेशन ही बची ऊपर पानी कोन स्वच्छ हो ऊपर पानी क्लियर स्वच्छ हो that process is called coagulation. That process is called what? Coagulation. So when an electrolyte is added in large concentration, when an electrolyte is added in large concentration, the particles of the solution takes up the particles of the solution takes up the ions, takes up the
ions. When an electrolyte is added in large concentration, the particles of the solution takes up the ions which are oppositely charged and thus get neutralized. So simple coagulation, when an electrolyte is added in large concentration of electrolyte का ऐड करना colloidal solution में जो particles थिवा पॉजिटिव पार्टिकल कि नेगेटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल एग्रीगेट और हेजिवो न्यूट्रलाइजेशन हेजिवो जॉइन हेजिवो जो पार्टिकल्स ता जॉइन हेजिवो ताको लार्जर पार्टिकल साइज ता बढ़ी जिवो जो पार्टिकल साइज बढ़ी गले व्हिच गेट्स प्रेसिपिटेटेड से कौन को बसी जिवो से जो बसी जिवा को ताको कोन कोagulation. So when an electrolyte is added in large concentration, the particles of the solution takes up the ions which are oppositely charged and thus get neutralized. The neutral particles get aggregated. The neutral particles gets aggregated to the neutral particles gets aggregated to give the neutral particles gets aggregated to give particles of larger size. The neutral particles gets aggregated to give particles of larger size which gets precipitated. Which gets precipitated. देखो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट कहला एडी गुटिए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जेते बेले वेल आमे गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ता ऐड करिबा जेता इलेक्ट्रोलाइट ता ऐड करिबा सी कोन करिबो जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स असति ताकू न्यूट्रलाइज करिया पई आनिबो न्यूट्रलाइज करिया पई आनिबो जेता न्यूट्रलाइज करिया पई आनिबो पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस तो जॉइन हो जिवो ताकर से न्यूट्रलाइज हो जिवे तार साइज ऑफ द पार्टिकल बढ़ी जिवो जब साइज ऑफ द पार्टिकल बढ़ी जिवो तार मास ता बढ़ी जिवो that will settle down precipitation है बसी ये जो precipitation है बसी जीवाटा को कौन कहजिवो coagulation ये जो precipitation है बसी जीवाटा को कौन कहजिवो coagulation. The process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate. The process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate by the addition of some suitable electrolyte is called coagulation. As the definition लिख परिबो एटा लिख परिबो. So when an electrolyte is added in large concentration जत्ता बेले गोटे electrolyte large concentration ऐड करिवो the particles of the solution takes up the ion solution में पार्टिकल का आयन को टेक अप करिवो पूरा जोटा ऑपोजिटली चार्ज दिवो सिंपल जत्ता बेले ओमे लार्ज कंसंट्रेशन रो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करिवो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल जो कोलोइडल सॉल्यूशन में थिबो से न्यूट्रलाइज हिबो तो जॉइन करि जिवे जॉइन करि गेले कोन हबो तार मास ता बढ़ी जिवो मास बढ़ी गेले से कोन हबो दे विल सेटल डाउन that is the neutral particles get aggregated to give particles of larger size which get precipitated so precipitation है कि बसी जिवो एई प्रोसेस ता को कहबो coagulation और सिंपल डेफिनेशन में लिख परिबो एटा फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट the process of aggregation of colloidal particles. The process of aggregation of colloidal
particles into an insoluble precipitates by the addition of some suitable electrolyte. The process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate by the addition of some suitable electrolyte is called or is known as coagulation. Coagulation. Coagulation spelling coagulation. এটা coagulation coagulation. So simple. The process of aggregation of colloidal particles. The process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate. Insoluble precipitate by the addition of some suitable electrolytes is known as colloidal solution. So the process of जो process रे colloidal particles रो positive और negative charge टा join neutral हवा और join हो जीवो का थ्रू रे जो electrolyte टा हमें ऐड करिबा जा फले कि तार मास टा बढ़ी जीवो मास बढ़ी गले सेटा precipitate हेकी तळे बसिबो. That process is called coagulation. ए जो electrolyte टा हम ऐड करूचे सेटा को जाय coagulant. That is called coagulant. In a definition, at lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called flocculation. Coagulation or flocculation. Coagulation or flocculation with a little difference. If you take lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called flocculation, and this flocculation that can be reversed by sucking. If you suck the solution, the flocculation changes. If at lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called flocculation. First, only this point you will write. Next, at lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called flocculation. At lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called flocculation, that can be reversed by sucking. Lower concentration of electrolytes से aggregation of the particles जो मिसी की ताको settle down हो ताको कौन पाएगा flocculation. But higher concentration of the electrolyte, the particles is called coagulation, and that cannot be reversed from sucking. That cannot be reversed simply by sucking. Clear? And simple at lower concentration of the electrolyte, then particles का aggregate होगा, same process precipitation भी होगा, किंतु सेटा कौन पाएगा flocculation, and that can be reversed by sucking. ताको sucking बोले
reverse type. But at higher concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called coagulation, and that cannot be reversed by second. Very lower concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles at lower concentration of the aggregation of the particles is called coagulation, and higher concentration of the electrolyte, the aggregation of the particles is called coagulation. That cannot be reversed by second. That cannot be reversed by simple second. That cannot be reversed by simple second. In this point you may write or may not, but these 2 points you have to write must. And examples, these 2 points you may write or may not, but these 2 points you must have to write these 2 points. If this is coagulation or coagulation means simple ओडिया कहला गोटे कॉलॉइडल सॉल्यूशन अच्छी सेथरे आमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करबा, गोटे कॉलॉइडल सॉल्यूशन अच्छी सेथरे आमे गोटे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करबा. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करले कोन हो, जो पार्टिकल्स ना थिबो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ना थिबो कॉलॉइडल सॉल्यूशन ने से माने एग्रीगेट हिजबो, न्यूट्रलाइज हिजबे. न्यूट्रलाइज हेले तार मास ता बढ़ी जीवो, मास बढ़ी गेले से माने प्रेसिपिटेशन ही बसी जीवो. मास बढ़ी गेले प्रेसिपिटेशन ही बसी जीवे. এই যে প্রেসিপিটেশন এই বসি যাবা কোন কয় দিবে coagulation. That process is called coagulation. So this part, the process of aggregation of colloidal particles into an insoluble precipitate की तरह बसी जावे by the addition of some suitable electrolyte is known as coagulation. Example is these 2 points you must have to write. What is coagulation or flocculation? Next is example is on adding Na3PO4 solution. On adding Na3PO4 solution in ferric hydroxide salt. In ferric hydroxide salt. On adding Na3PO4 solution in ferric hydroxide salt, positively charged colloidal particles are neutralized by PO4 3 minus ions. Very important. On example, on a very simple example I am giving, on adding Na3PO4 solution in ferric hydroxide salt, FeO is 13. On adding Na3PO4 solution in ferric hydroxide salt, positively charged colloidal particles are neutralized by positively charged Fe3+ ions. Fe3+ ions are neutralized by phosphate ions. That is the best example of colloidal coagulation or flocculation.
That is the best example of on adding Na3PO4 salt. On adding Na3PO4 salt, on adding Na3PO4 solution in ferric hydroxide salt, positively charged colloidal particles are neutralized by phosphate ions. Positively charged colloidal particles are neutralized by phosphate ions. This is all about coagulation or flocculation. If we add the electrolyte of lower concentration, the particles will aggregate, that is called flocculation. But if we add electrolyte of higher concentration, the particles will aggregate to precipitate, that is called flocculation. That is called coagulation. Higher concentration of electrolyte if you add, that is coagulation. Lower concentration of electrolyte if you add, that is flocculation. This is the only simple difference. Otherwise, coagulation or flocculation is same. Coagulation or flocculation is same. If we add lower concentration of the electrolyte, that is flocculation. If we add higher concentration of the electrolyte, that is called coagulation. Next is Hardy-Squartz rule. That is Hardy-Squartz rule. Hardy, Squartz, SCHULZE, Hardy-Squartz rule. Very important. What is Hardy-Squartz rule? The greater the valency of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation. The greater the valency of the flocculating ion statement, the greater the valency of the flocculating ion, the greater the valency of the flocculating ion added, the greater the valency of the flocculating ion added, the greater is its power, to cause, the greater is its power to cause precipitation. Statement, look at the greater the valency of the flocculating ion added, the greater is its power to cause precipitation. Jodi valency, the greater the valency flocculating ion ro valency na adhika thibo, taro adhika power rahibo precipitation karaiba. Respective charge, particular respective charge. Coagulating powers of NaOH to coagulate the positively charged colloidal solution is in this order. Coagulating, as an example, coagulating power of anions to
coagulating power of anions to coagulate a positively charged coagulating power of anions to coagulate a positively charged coagulating power of anions to coagulate a positively charged colloidal solution is in the following order: I minus less than SO4 2 minus less than PO4 3 minus Fe CN6 4 minus. Look at coagulating power of anion to coagulate a positively charged colloidal solution. जो एनायन रो वैलेंस का एट रो आयन का देते 1 -1 -2 -3 -1 आर वैलेंस का अधिक coagulating power of anions এই जो एनायन रो जहां coagulating power of anions to coagulate a positively charged colloidal solution ধরা ଆମେ ଗୋଟେ সলিউশন ଅଛି colloidal solution ଅଛି ସେଥିରେ पॉजिटिवली चार्ज colloidal solution मतलब এই जो फ्लोकुलेटिंग आयन का ଆମେ ऐड करबा I माइनस ऐड करबा किबा सल्फेट माइनस ऐड करबा फॉस्फेट ऐड करबा किबा FeCN6 4 माइनस ऐड करबा कोटा ऐड करले अधिक कोआगुलेशन हो कोटा ऐड करले अधिक कोआगुलेशन हो ना एटा ऐड कर काई का वैलेंस का अधिक আছে ग्रेटर द वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन अर्थात गोटे पॉजिटिवली चार्ज colloidal solution रे एई आयन्स भितर ओ आयन्स टा नेले हमें ऐड करले प्रेसिपिटेशन का अधिक हो ना एई आयन्स काई आर वैलेंस का अधिक R4 माइनस R के 3 माइनस R2 माइनस R1 माइनस क्लियर so the greater the valence of the flocculating ion added the greater the valence of the flocculating ion added the greater is its power to cause precipitation the greater the valence of the flocculating ion added the greater is its power to cause precipitation coagulating power of anions to coagulate a positively charged colloidal solution is in the following order: I minus SO4 minus phosphate minus FeCN6 4 minus. वर्तमान coagulating power of anion to coagulate a positively charged colloidal solution colloidal solution का positively charged अछि ओ आयन्स का ऐड करे अधिक coagulation हो ना ए आयन्स का ऐड करे अधिक coagulation हो काई ज्ञान हो ना R minus अछि -1 R2 -2 R -3 -4 जार वैलेंस ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन का अधिक दिबो सेगा coagulating power of anion to coagulate a positively charged colloidal solution अधिक तरो ए जो फ्लोकुलेटिंग आयन का अधिक ऐड करे ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन ग्रेटर प्रेसिपिटेशन हो माने coagulation भी अधिक हो से बड़ी coagulating powers of coagulating power of cations to coagulate a negatively charged colloidal solution is in the following order that is Ag plus lead 2 plus Fe3 plus Si4 plus. Look at very important. Coagulating powers of cation to coagulate coagulating power of cation to coagulate a negatively charged colloidal solution in the following order: Ag plus
लेड 2 प्लस Fe3 प्लस Si4 का अधिका अछि Si4 प्लस 4 टा अधिका जार फ्लोकुलेटिंग आयन्स रो वैलेंसीटा अधिका थिबो सेटा कोआगुलेशन अधिका करे सिंपल कथा फ्लोकुलेटिंग जो फ्लोकुलेटिंग आयनटा हमें कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड करबा से कोआगुलेशन अधिका करेबो काडा जोटा अधिका वैलेंसी थिबो आउ जदि सॉल्यूशन ता कोलोइडल सॉल्यूशन ता पॉजिटिव चार्ज अछि ताले हम नेगेटिव चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन ऐड करबा जदि कोलोइडल सॉल्यूशन ता पॉजिटिव चार्ज अछि ताले हम पूरा ऐड करबा कोलोइडल सॉल्यूशन ता पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन ऐड करबा हायर वैलेंसी जदि कोआगुलेटिंग सॉल्यूशन ता पॉजिटिव नेगेटिवली अछि ताले हम फ्लोकुलेटिंग आयन पॉजिटिव चार्ज रो हायर वैलेंसी ऐड करले सेटा कोआगुलेशन अधिका पाइबो क्लियर सिंपल ग्रेटर की वैलेंसी अधिक जो फ्लोकुलेटिंग आयन रो वैलेंसीटा अधिका थिबो सेटा प्रेसिपिटेशन अधिका करेबो कोआगुलेशन भी अधिका प्रेसिपिटेशन अधिका करेबो व्हिच लीड्स टू कोआगुलेशन भी अधिका तने वर्तमान यदि सॉल्यूशन का सॉल्यूशन का कोन अछि पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन अछि ताने हम फ्लोकुलेटिंग आयन ऐड करबा जोरो जार वैलेंसी अधिका आ एटा वैलेंसी अधिका फ्लोकुलेटिंग आयन ता ऐड करबा तार वैलेंसीटा अधिका एवं कोआगुलेटिंग पावर केटा कोआगुलेट नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन जदि कोलोइडल सॉल्यूशन ता नेगेटिव जदि कोलोइडल सॉल्यूशन ता नेगेटिव चार्ज अछि जदि कोलोइडल सॉल्यूशन ता नेगेटिव चार्ज अछि ताले हमें जो फ्लोकुलेटिंग आयन का ऐड करबा तार पॉजिटिव चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन का ऐड करबा तार वैलेंसी भी अधिक होबा दैट इज कॉल्ड हार्डिस-पास लॉ सो जदि पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन अछि नेगेटिव चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन ऐड करबा विथ हायर वैलेंसी जदि नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन अछि हायर वैलेंसी रो पॉजिटिव चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन ऐड करियो क्लियर नेक्स्ट कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू next is coagulation value or next is what is coagulation value or flocculation value. What is flocculation value or coagulation value? What is flocculation value or coagulation value? Flocculation value or coagulation value. What is flocculation value or coagulation? The minimum concentration definition. What is flocculation value? The minimum concentration of the electrolyte. The minimum concentration of an electrolyte. The minimum concentration of an electrolyte required to cause precipitation. The minimum concentration of an electrolyte required to cause precipitation or coagulation. The minimum concentration of an electrolyte required to cause coagulation or flocculation. Coagulation or flocculation of a solution in 2 hours. Of a solution in 2 hours. Of a solution in 2 hours is called coagulation or flocculation. This is called coagulation or flocculation value. Generally, it is expressed in millimoles. It is expressed in millimoles per liter. Smaller the flocculation value, higher the
greater the precipitation power or greater the coagulating power, or smaller the flocculation value, greater is this precipitation power. Very important point. So simple flocculation value called जो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दरकार हो टू कॉज कोआगुलेशन ऑफ गोटे कॉलोइडल सॉल्यूशन रे जो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर हो ताको कोआगुलेशन किबा फ्लोकुलेशन करिया पाई इन 2 घंटा रे ताको कोन कहयो कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू सिंपल कर गोटे कॉलोइडल सॉल्यूशन हो कॉलोइडल सॉल्यूशन रे जो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करिवो 2 घंटा रे कोआगुलेशन किबा फ्लोकुलेशन होबो सेटा कोन कहयो कोआगुलेशन वैल्यू or flocculation value. It is expressed usually expressed in millimoles per liter. It is usually expressed in millimoles per liter. Smaller the flocculation value, greater is its power, to cause precipitation. Very important part. Look at this. The minimum concentration of electrolyte required to cause coagulation or flocculation of a solution. जो colloidal solution का दवा. Suppose we will take colloidal solution. जो colloidal solution है जो minimum concentration of electrolyte का add करीबा. जहाँ फलने की से coagulation होगा in 2 hours. ताकि कौन पाइयो coagulation value और flocculation value. एक कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू एक्सप्रेस करा जीवो कोजरे इन मिलीमोल्स पर लीटर कोजरे एक्सप्रेस करा जीवो इन मिलीमोल्स पर लीटर आ जदी फ्लोकुलेशन वैल्यू का कम हो ताले से सॉल्यूशन रे प्रेसिपिटेशन पावर का अधिक जदी इफ द कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू इज स्मॉल देन ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन एंड वाइस वर्सा smaller the flocculation value greater is its power to cause precipitation larger the flocculation value smaller is its power to cause precipitation और vice versa में लिख दियो so flocculation value और coagulation value का आपको आजीबो जो minimum concentration इलेक्ट्रोलाइट का हमें ऐड करबा गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन रे ताकू कोआगुलेशन करबा पाई इन 2 घंटा रे ताकू का आजीबो कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू जो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का हमें ऐड करबा गोटे कोलोइडल सॉल्यूशन रे सी ताकू कोआगुलेट करिवो किबा फ्लोकुलेट करिवो 2 घंटा रे ताकू कोन पाजिवो कोआगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू एटा एक्सप्रेस करा जिवो मिलीमोल्स पर लीटर रे एवं जदी फ्लोकुलेशन वैल्यू इफ द फ्लोकुलेशन वैल्यू इज स्मॉल तार प्रेसिपिटेशन पावर का अधिक हो जदी फ्लोकुलेशन वैल्यू का हाई प्रेसिपिटेशन पावर का कम फ्लोकुलेशन वैल्यू हाई है प्रेसिपिटेशन पावर कम होगा फ्लोकुलेशन वैल्यू कम है प्रेसिपिटेशन पावर का अधिक हो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोकुलेशन और कोआगुलेशन नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव कोलाइट protective collar and gold number. So these are all short questions. Harris quadrille, that is 2 mark question, or 3 mark 1 mark question. He mostly put the 1 mark question, but flocculation value 2 mark question. Harris quadrille 2 mark and also 1 mark. He will give the multiple choice question. And next is protective collides. Protective collides. So what is protective collides? The action of the hydrophilic colloid to cause precipitation of the hydrophobic colloid by the electrolyte is called protection, and the hydrophilic colloid is called protective colloid. Protective colloid होला the action
the action of the hydrophilic colloid, the action of the hydrophilic colloids to the action of the hydrophilic colloid to prevent precipitation, to prevent the action of the hydrophilic colloid to prevent precipitation of the hydrophobic colloid by the electrolyte is called protection, and the hydrophilic colloid is called protecting colloid. Look at बर्तमान हमें गोटे हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग. We have to the action of the hydrophilic colloid to prevent precipitation of the hydrophobic colloid. हमें ऐड करबा हाइड्रोफिलिक colloids का. Suppose this is hydrophilic colloid, this is hydrophobic colloid. Look at the action of the hydrophilic colloids. A hydrophilic colloid the action of the hydrophilic colloid to prevent precipitation of the hydrophobic colloid by the electrolyte is called protection, and the hydrophilic colloid is called protective colloid. Simple. आमे जो हाइड्रोफिलिक colloid टाकू ऐड करबा हाइड्रोफोबिक colloid रे से कोन करबा हाइड्रोफोबिक colloid रो प्रेसिपिटेशन टाकू बंद कर दो, प्रिवेंट कर दो, और बंद कर दो ताकू कोन कर दो प्रोटेक्टिव colloid. से जो हाइड्रोफिलिक colloid टाकू कोन कर दो प्रोटेक्टिव colloid. से हाइड्रोफिलिक colloid टाकू कोन कर दो एई हाइड्रोफिलिक colloid टाकू कोन कर दो protective colloids. Here the action of the hydrophilic colloid to prevent precipitation of the hydrophobic colloid by the electrolyte is called protection, and the hydrophilic colloid is called protective colloid. बटन सिंपल देखो एटाला हाइड्रोफोबिक colloids, एटाला हाइड्रोफिलिक colloids. हाइड्रोफिलिक colloids टाको हम ऐड करना को हाइड्रोफोबिक colloids रे से कोन करबो प्रिवेंट करबो प्रेसिपिटेशन का हाइड्रोफोबिक colloid रो प्रेसिपिटेशन टाको प्रिवेंट करबो ताकू आजिबो हाइड्रोफिलिक. से जो हाइड्रोफिलिक colloid टाको प्रोटेक्टिव colloid करबो. सिंपल हाइड्रोफिलिक colloid ला हम हाइड्रोफिलिक माने वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक माने वाटर हेटिंग. सो हाइड्रोफिलिक colloid टाको हम हाइड्रोफोबिक colloid रे ऐड हाइड्रोफिलिक colloid टाको हम हाइड्रोफोबिक colloid रे ऐड करबा. से कोन करबो हाइड्रोफोबिक colloid रो प्रेसिपिटेशन टाको प्रिवेंट करबो, बंद कर दो. सेही colloid टाको सो हाइड्रोफिलिक colloid टाको protective colloid. सेही हाइड्रोफिलिक colloid टाको कोन करबो protective colloid. और another definition the colloid which is added to, और simple definition में हम लिख करबो. और a definition if you cannot write this definition, those who cannot write this definition, this is the original definition, you may write this definition. The colloid which is added, the colloid which is
added, the colloid which is added to prevent look at simple definition हम यदि consider करिबा the colloid which is added to prevent coagulation of the colloidal solution जो colloid टा में ऐड करिबा से कोन करिबा गोटे colloidal solution को prevent करिबा coagulation ताको कोन करिबा protective colloid जो simple the colloid which is added to prevent coagulation of the colloidal solution नो coagulation को prevent करिबा रे जो colloid टा में ऐड करिबा ताको कोन करिबा protective colloid simple the colloid which is added to prevent coagulation of the colloidal salt is called protective colloid जो colloid टा हम ऐड करिबा prevent करिबो coagulation हमारे कोडा जोटा prevent करिबो coagulation हमारे का colloidal solution को ताको कोन करिबो protective colloid so the colloidal solution the colloid which is added to prevent coagulation of the colloidal solution is called protective colloid. Protective colloid generally हम example कौन होगा glue, gelatin, starch, gum ये लोग example. Protective colloid example नहीं करेगा glue, gelatin, gum, starch, etc. Glue, gelatin, gum, starch, etc. are the examples of protective colloids. Clear?